Hi everyone, welcome to the first video of react.js course. My name is Ashish and I'm a front-end developer, and in this video we will be learning about the overview of the course and the prerequisite of this course, why you should follow this course and what you will get to learn inside this course. Even if you are a beginner or if you are want to master your skills in react.js, this course is for you. So let's just see that what you will get inside this course to learn. In this video we will be learning more introduction how React works and what are the other ways to create React app, and whether we should follow Vite or CRA command tool to create the React app, and what are the benefits of using Vite and what is the benefit of using CRA, which is the better, we will understand. And let's see what is the prerequisite of this course, what is required before we start learning React. So आपको HTML बेसिक HTML CSS और JavaScript आना चाहिए, और अगर आप ऑब्वियसली वैसे अगर आप इस चैनल पे आए हो या इस कोर्स पे आए हो तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। तो इसके बाद क्या है कि आपको एक पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। बेसिकली हम VS कोड यूज़ करेंगे जो कि सबके पास ऑलरेडी होगा ही, एंड एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जो भी अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी टॉपिक, एंड आफ्टर लर्निंग एवरी टॉपिक you just implement those learning inside your project or inside your test project. And let's now see the overview of the course. So inside this course we'll be learning about each topic of the React, like what is JSX and how it works with React components, React component कैसे बनाते हैं, props क्या होते हैं, I mean all everything inside React, how to handle the events and form के डेटा हम कैसे लेते हैं, उसको सबमिट कैसे करते हैं बैकएंड पे, जो हमारा HTML के इवेंट्स होता है उसको React में कैसे यूज़ करते हैं, हुक्स क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट, और फाइनली जब हम रिएक्ट पढ़ लेंगे तो फाइनली हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे विद कॉन्फिडेंस। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपलसरी होता है। और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल क्रिएट अ real world project. You can see here on the screen we have a proper project idea, how to implement different pages, different components, how a real world project is developed. We will see everything inside this course. So I hope that you will be excited to follow this course, and if you have any doubt or any question regarding this course, you can just comment down inside this on this video, and let's meet in next video for VS Code and project setup and creating a new React app so that we can start learning React. Thanks for watching. If you are new on this channel, make sure you subscribe this channel so that you can learn. And one final thing is that I want to share all and everything I have learned in all of my experience, which I have gained by working in startup as well as MNC. So let's begin and let's learn something new, and let's learn advanced React.js. Okay, thanks for watching.